I was saying that the question that emerged now is that क्या ही environmental crisis जो किसी भी वजह से, is this environmental crisis a recent phenomenon? Is it something that is happening just of now? Why over last 2.5 decades the people have started talking about it? Why Montreal Protocol? Why roundtable conferences are happening across the world? 20-25 साल से ही क्यों लोग एनवायरमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज की बातें करने लगे हैं? क्या उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी? क्या एनवायरमेंटल इश्यूज उससे पहले नहीं थे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? We can say that yes, it's a recent phenomenon. Environmental crisis is a recent phenomenon. Again, the question would arise, how can we say that environmental crisis is a recent phenomenon? We need to note that earlier, the availability of resources was more, whereas the population was less, technology was relatively less, the rate of extraction of the resources was less than the rate of regeneration. In very simple words, the demand for the resources was less, whereas the availability and supply was more. Supply ज़्यादा थी, population कम थी, industrialization कम थी, जिसकी वजह से demand कम थी. And as a result of it, environment was able to carry the population, environment was able to absorb the waste, it was able to provide us with the resources. All the functions were being performed by the environment very meticulously. But over the period, what happened? The population started increasing leaps and bounds. Population explosion happened, right? Not just in our country, but across the world, the population started rising very fast. Not only that, industrial revolution, industries expanded its limbs across the world. And due to industrial revolution, all of a sudden the demand for natural resources, it increased. Due to industrial revolution, the waste generation also increased, and the wastes went beyond the absorptive capacity of the environment. यानी पहले demand कम थी और supply ज़्यादा थी, but now the demand supply reversal has taken place. Now the demand is much more than the availability. एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन की वजह से सप्लाई कम होती जा रही है. सप्लाई इज डिक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, नाउ द डिमांड इज मच मोर देन सप्लाई, which is putting pressure on environment and has led to environmental crisis. Therefore, we can say that this environmental crisis is a recent phenomena which has happened primarily because of demand supply reversal. मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. There are common issues with respect to environment. आपको मालूम है, global warming is one common issue. Ozone depletion is another common issue जिसके बारे में दुनिया भर में बातें होती हैं. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मुझे लगता है सब लोगों को पता है. यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्लोबल वार्मिंग. इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है. पिछले 100 सालों के अंदर अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इट हैज गॉन अप बाय 1 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो पिछले 100 सालों में बढ़ा है, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन अनदर 25 to 30 years the temperature would again go up by 1 degree Celsius. उसके बाद सिर्फ 10 ही सालों में 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए. यानी जो काम पहले 100 सालों में हुआ है वो 25 सालों में, और उसके बाद सिर्फ 10 ही सालों में हो जाए. राइट नाउ आप कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? माइंड इट, दिस इज एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है पोलर अर्थ के पोल्स पर, तो पोलर आइसेस विल मेल्ट. पोलर आइसेस मेल्ट होंगी तो वाटर लेवल, आपको मालूम है 75% ऑफ द अर्थ कंप्राइज ऑफ वाटर राइट नाउ आल्सो. अगर ये पोलर आइसेस मेल्ट होंगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द वाटर लेवल विल राइज फर्दर.
and the land territories will start getting submerged into water. धीरे धीरे land area कम होने लगेगा, water bodies बढ़ने लगे. So that would happen. What will happen because of global warming? Is that clear? So आपको मालूम है global warming के बहुत सारे कारण हैं. Deforestation, releasing of methane gas, burning of coal, petroleum products, overgrazing, increased cattle production. ये सब reasons हैं जिसकी वजह से global warming is happening. और इसके effects मैंने बताया ही आपको. Melting of ice, natural disaster, tropical diseases. All these things are the common consequences of global warming, so we need to check. Similarly, ozone depletion. आपको मालूम है हमारे environment में there is an ozone layer, right? Which is actually preventing the ultraviolet rays of the sun to reach the earth. अगर ये UV rays earth तक पहुंचेंगे तो that would cause a lot of skin diseases and skin problems to the people. But over the years, due to emission of chlorofluorocarbons, primarily because of air conditioners and refrigerators, the ozone layer across the world is depleting, right? जिसकी वजह से harmful ultraviolet rays of the sun are reaching the earth, causing damages to the living organism. Skin cancer, the incidences of skin cancer among human beings, that is on a rise, and all these problems are arising. So these are certain environmental issues which are of concern, and that is why it is necessary that we should preserve our environment. For that, the world is talking. Dunya baat kar rahi hai. So we can say that because of all these reasons, in sab karanon se, environmental concern is something which is the need of the day. अब इसके लिए what all things have been done, इंडिया के एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है, क्या हमारे चैलेंजेस हैं, और उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सब चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. आई थिंक वन मोर क्लास दिस चैप्टर वुड बी फिनिश्ड. एक क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो परसों, दैट मींस द डे आफ्टर टुमारो, आई वुड बी सीइंग यू एट द टाइम ऑफ द क्लास, यानी 4 o'clock. राइट चिल्ड्रन? Okay, sir.